बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। Today we are going to read the text of the poem Loveliest of Trees, the Cherry Now. As I have already given you the introduction of the poem as well as the poet. The poet is A.E. Houseman. Now, before starting the poem, I will give you again a brief introduction of the poem. To the poet, the most beautiful of the trees is the cherry. The poet wants to enjoy this sight fully, but he is left with 50 years only, and his period is not sufficient to cherish the beauty of cherry. He does not want to miss any chance. The poet is sorrowful at the lapse of 20 years of his life. He has expressed his love for nature and transitory aspect of human life. So he wants to cherish and enjoy the beauty of nature till the last moment of life. The poem is written in simple language which makes the poem easy to understand. Cherry resembles Christmas tree and Christmas father. बेटा, पोइट ने अपनी राय में खूबसूरत तरीन दरख्त चेरी जो है, चेरी को खूबसूरत तरीन दरख्त कहा है। पोइट इस नज़ारे से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता है। उसके पास सिर्फ 50 साल का अरसा बचा है और ये अरसा चेरी से महजूज़ होने के लिए नाकाफ़ी उसको समझता है। वो इतना फैसिनेट हो जाता है उस सीन से, चेरी के दरख्त से। वैसे भी कभी बेटा आपको मौका मिले तो चेरी के दरख्त बहुत खूबसूरत लगते हैं, और वो ये मौका उससे महजूज़ होने का ज़ाया नहीं करना चाहता। A.E. हाउसमैन अपनी ज़िंदगी के 20 साल गुजर जाने पर अफसरदा है। उसने फितरत से मोहब्बत और इंसानी ज़िंदगी का ख़त्म हो जाने वाला पहलू जो है पेश किया है। ज़िंदगी जैसे सबको पता है, उसे भी पता है कि ज़िंदगी जो है वो पानी के बुलबुले की तरह है, जल्द मिट जाने वाली। आखिरी लम्हे तक फितरत के हुस्न को अज़ीज़ रखते हुए या उससे खुश होते हुए वो इससे प्यार करना चाहता है। ये नज़म जो है वो सादा से अल्फाज में लिखी गई है, और ये सादा से अल्फाज जो है नज़म को समझने में आसानी देते हैं। चेरी यहाँ क्रिसमस ट्री और क्रिसमस फादर के वो मुशाबे इसको समझता है। First of all, I will read the poem. Loveliest of trees, the cherry now is hung with bloom along the buff, and stands about the woodland ride, wearing white for Easter tide. Now of my 60 years and 10, 20 will not come again, and take from 70 spring a score, it only leaves me 50 more. And since to look at things in bloom, 50 springs are little room, about the woodland I will go, to see the cherry hung with snow. First stanza, loveliest of trees the cherry now. कहता है दरख्तों में हसीन तरीन दरख्त जो है वो तो चेरी ही है। अब इस हंग विद ब्लूम, इस हंग लटका हुआ है, लदा हुआ है, विद ब्लूम अलॉन्ग द बफ, अलॉन्ग द बफ शाखों तक, विद ब्लूम फूलों से लदा हुआ है, झुका हुआ है। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड, और जंगल से गुजरने वाले रास्ते के किनारे खड़ा है।
wearing white for ईस्टर टाइड, यानी उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ है ईस्टर का त्यौहार मनाने के लिए. My dear students, if we are going to write its reference to the context, as I have already told you in the previous poem, that we will write reference as these lines have been taken from the poem Loveliest of Trees, the Cherry Now, composed by A.E. Houseman, and its context that are called Sayako Sabak in Urdu. Its context will be written as the poet describes the beauty of the cherry tree in bloom. It has put on white dress for Easter. He wishes to go to the jungle to have a look at it when it covered with flowers. Now, the explanation that is called in Urdu Tashri. The poet described the beauty of the cherry tree. This is the most beautiful of all the trees. Flowers have sprung at its branches, and the branches are hanging with their load. It stands on the way to the woodland. It is wearing white dress to celebrate Easter, to add to its festivity. It seems that Cherry has cast a magical influence of the poet. The poet describes the beauty of nature with simple emotions. He has great love for nature, memory for the past, and pathos for man's brief existence. The white flowers of the cherry, before their development into fruit, cover it like washed white cloths. The poem is a magical whole. The rhyme scheme used is as BB, AABB. The word cherry now, along the buff, and woodland ride, Easter tide. Woodland ride, Easter tide. That is called BB and AABB.